कल के लेक्चर में हमने HDFS आर्किटेक्चर के बारे में पढ़ा था। आर्किटेक्चर पढ़ने के साथ साथ हमने ये भी देखा था कि बेसिकली HDFS होता क्या है और कौन कौन से डिमन्स यूज किए जाते हैं। तो हमने ये देखा था सिंपली फॉर स्टोरिंग अ डेटा वी यूज Hadoop डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम दैट इज HDFS एंड फॉर प्रोसेसिंग द डेटा वी यूज MapReduce। तो पहले फेज की बात हम लोग कर रहे थे पिछले लेक्चर में HDFS के बारे में, और हमने ये भी पढ़ा था कि देयर आर 5 सर्विसेज और डीमन्स यूज्ड इन HDFS आर्किटेक्चर, दैट इज नेम नोड, सेकेंडरी नेम नोड, जॉब ट्रैकर, टास्क ट्रैकर एंड डेटा नोड. So these are the 5 daemons used in the HDFS architecture. Now in this lecture we will see what is the role, what is the responsibility of all daemons. So let's start with the name node. जैसा कि हम लोग जानते हैं कि नेम नोड इज द ओनली सिंगल पॉइंट ऑफ फेल्योर बिकॉज द मेटा डेटा अवेलेबल एट द नेम नोड साइड. मेटा डेटा इज डेटा अबाउट डेटा. सो नेम नोड is a single point of failure and it is used to store the metadata such as fs image and edit log files. So name node is the master node in the Apache Hadoop HDFS architecture that maintain and manage the block presented at the data nodes. And this is a very highly available server that manage the file system namespace and control access to files by the client. And we will discuss here the high availability features of HDFS. And the HDFS architecture is built in such a way that user data never reside on the name node. The data resides at data node only. हमने ये भी देखा था कि किस तरीके से only the we can store the metadata and at the side of name node, लेकिन ओरिजिनल डेटा जो होता है वो हमारा डेटा नोड पे ही होता है. नेम नोड केवल रिकॉर्ड रखता है कि वेयर योर फाइल्स इज अवेलेबल एट द डेटा नोड साइड. So there are some functions of name node and we will see one by one. First one is it is the master daemons that maintain and manage the data node, and data node is the daemons available on the slave services. Second is a name node record the metadata of all the files stored in the cluster, like as the location of the block stored, the size of the files, permission hierarchy, etc. And there are 2 files associated with the metadata. First one is a fs image. So fs image contain the complete state of the file system namespace since the start of the name node. And second one is edit log files. So it contain all the recent modification made to the file system with respect to the most recent fs image. So मैंने बोला था कि there is a 2 types of name node. First one is a name node, the second one is a secondary name node. So name node, basically secondary name node is not means that it will be take a backup of the name node, or after the failure of name node we use secondary name node. This is not concept of secondary name node. Basically the work of secondary name node is periodically it will merge the fs image with edit log files and generate a new fs image, and this new fs image will be uploaded or will be modified at the site of name node. जैसा कि हमें पता है कि हमने पूरे आर्किटेक्चर में देखा था कि each edit log files change rapidly after 3 seconds or multiple of 3 seconds, because हर एक 3 सेकंड पे it may be possible that some data node may be corrupted or some data node may be fault.
So after every 3 seconds, edit log files and FS image is updated, and the working of updations of FS image and edit log files is the work of secondary name node. Third point regarding to name node function is it record each change that take place to the file system metadata. For example, if a file is deleted in HDFS, the name node will immediately record this in edit log files. Next point is name node regularly receive a heartbeat and block report from all the data nodes in the cluster to ensure that data node are still alive. These all the points we have already discussed. इस लेक्चर में हम केवल उसको एक रिटन फॉर्मेट में आपके सामने लेकर के आ रहे हैं. ये सारे चीज हमने कल के लेक्चर में जब आर्किटेक्चर आप लोगों को बताया तो सारे चीज मैंने आपको बताए हुए हैं. Next one is it keeps a record of all the blocks in HDFS and in which node these blocks are located. Next point is the name node is also responsible to take care of the replication factor of all the blocks, which we will discuss in detail later in this HDFS architecture. And in the case of data node failure, the name node choose new data node for the new replicas, balance disk users, and manage the communication traffic to the data node. So these are the some services given by the name node. Second one daemons is the data node. So we know the actual data are reside in data nodes. Name node only contains the metadata, but the actual data is available at the side of data node. So data node are the slab nodes in HDFS architecture, and unlike the name node, data node is commodity hardware. Now again is the word, what is the commodity hardware? So basically a hardware which are not so higher configuration in compare of our laptop or PC, normal laptop or PC. Means when we talk about the commodity hardware, तो हम जो अपनी डेली लाइफ में मीन्स जो हमारे पास अपना पर्सनल कंप्यूटर है या अपना लैपटॉप है, वो हमारे कमोडिटी हार्डवेयर मीन्स चीप हार्डवेयर, सस्ते हार्डवेयर जिसकी कोई गारंटी वारंटी नहीं होती है. इसको हम इस तरीके से समझ सकते हैं कि आप एक हार्ड डिस्क खरीद के लेकर के आते हैं, बोला जाता है उसमें 5 साल की गारंटी है. गारंटी देने के बावजूद इट इज स्टिल नॉट क्लियर दैट कि ये 5 साल बाद ही खराब होगा. 5 साल पहले भी खराब हो सकता है. जब मैं गारंटी दे रहा हूँ तो उसमें खराब होने की कोई संभावना नहीं होनी चाहिए. बट स्टिल वी आर यूजिंग अ चीप हार्डवेयर दैट इज अ कमोडिटी हार्डवेयर. सो नेम नोड जो होता है वो हायर कॉन्फ़िगरेशन सर्वर होता है, एंड द components are hardware components used at the side of name node are not commodity hardware. They are highly configured and they are the original hardware. मीन्स अगर जो हम 1 टेराबाइट का हार्ड डिस्क 5,000 रुपए का खरीद के लेकर के आते हैं, अगर वो कमोडिटी हार्डवेयर नहीं है तो उसकी कॉस्ट 5 लाख रुपए होगी 1 टेराबाइट की, और वो सारी चीज की गारंटी देता है. मीन्स हमने 5 साल बोला है तो वो 5 साल से पहले उसमें बिल्कुल खराबी नहीं आ सकती है. एंड प्रोसेसर धीरे धीरे स्लो नहीं होता. लाइक ऐसे कि हम 10,000 रुपए का एमआई का फोन खरीद के लेकर के आते हैं, सेम कॉन्फ़िगरेशन का आईफोन करीब 80,000 रुपए 90,000 रुपए का मिलता है. वाई? बिकॉज आईफोन कमोडिटी हार्डवेयर यूज नहीं करता है. दिस इज द रीजन फॉर हायर प्राइस ऑफ आईफोन. So data node is a commodity hardware, and that is a non-expensive system which is not of high quality or high availability. The data node is a block server that stores the data in the local file that will be either exactly 3 files or exactly 4 files. Means replications of 3 or 4 files. And it will depend on the programmer कि वो कितने replications file रखना चाहता है. And again, these are the some functions of data node.
First one is, these are the slab daemons or process which run on each slab machine. The actual data is stored at data node side. The data node performs the low-level read and write request from the file system client. And the data node sends heartbeat to the name node periodically to report the overall health of HDFS. By default, this frequency is set to 3 seconds. मीन्स हर एक 3 सेकेंड बाद डेटा नोड नेम नोड को हार्ट बीट सेंड करेगा दैट स्टिल आई एम अलाइव, अभी मैं जिंदा हूं। तो नेम नोड को पता रहता है कि भाई हाँ हमारा करस्पॉन्डिंग डेटा नोड इज नॉट फॉल्टी, स्टिल वो वर्क कर रहा है, बस्ट नहीं किया है। Until now, we must have realized that the name node is pretty much important to us. If it fails, we are doomed. But don't worry, we will talking about how Hadoop solve this single point of failure problem in next lecture. Or here we give on some detail about how we say that this is a single point of failure. पूरे चीज को नेम नोड और डेटा नोड को जरा मैं समराइज करके आपको इस चीज क्लियर कर दूं। पहला पॉइंट कि नेम नोड इज नॉट अ कमोडिटी हार्डवेयर। सेकंड पॉइंट, डेटा नोड इज अ कमोडिटी हार्डवेयर। आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा व्हाई डेटा नोड इज अ कमोडिटी हार्डवेयर, मींस व्हाई वी यूज कमोडिटी हार्डवेयर इन द डेटा नोड बट नॉट इन द केस ऑफ नेम नोड। तो पहला पॉइंट ये है कि कमोडिटी हार्डवेयर 10 गुना सस्ता होता है। अगर मैं डेटा नोड को भी कमोडिटी हार्डवेयर ना यूज करके मैं एक रिलायबल हार्डवेयर यूज करूं, then the cost of the HDFR architecture is much more higher than in compare of if we are using a commodity hardware. तो प्राइस को कम करने के लिए हम क्या करते हैं कि डेटा नोड जो कि डेटा स्टोर एक्चुअली में डेटा स्टोर करता है वहां पे हम कमोडिटी हार्डवेयर यूज करते हैं, और डेटा हमारा लॉस्ट ना हो इसके लिए हम रिप्लिका का यूज करते हैं। मीन्स सेम डेटा हमारा 3 मशीन पे होता है। तो फिर आप एक क्वेश्चन करोगे कि सर सेम डेटा अगर 3 मशीन पे है देन देयर इज अ ह्यूज वेस्टेज ऑफ मेमोरी पावर। यस, अगर मैं डेटा 3 नोड पे रख रहा हूं तो मेमोरी का वेस्टेज होगा, बट फॉर द सिक्योरिटी ऑफ आवर डेटा वी यूज 3 रिप्लिका। फिर आप कहोगे क्वेश्चन कि सर मैं डेटा नोड को अगर मैं कमोडिटी हार्डवेयर ना यूज करके मैं स्टैंडर्ड हार्डवेयर यूज करूं, तो उसका जवाब ये है कि अगर मैं 10 गुना महंगा सामान यूज कर रहा हूं और दूसरे के केस में मैं 10 गुना सस्ता सामान यूज कर रहा हूं लेकिन उसका 3 रिप्लिका बना रहा हूं, फिर भी मेरे पास 7% कॉस्ट की प्रॉफिट हुई। अगर मैं जो 10 रुपए का लेकर के आ रहा था स्टैंडर्ड हार्डवेयर, कमोडिटी हार्डवेयर सेम 1 रुपए का पड़ेगा, और मैं 1 रुपए का 3 हार्डवेयर यूज करके 3 रिप्लिका यूज कर रहा हूं, तो 3 ही रुपए हमारे वेस्ट हुए, फिर भी 7 रुपीज हमारा बचा। सो दिस इज द वे कि हम डेटा नोड पे कमोडिटी हार्डवेयर यूज करते हैं और साथ साथ में रिप्लिका भी प्रोवाइड करते हैं, ताकि अगर कोई एक पर्टिकुलर डेटा नोड बस्ट हो गया तो उस पर अवेलेबल जितने भी डेटा हैं वो हमारे लॉस्ट ना हो, वो किसी ना किसी हार्डवेयर पे सुरक्षित पड़े हो, किसी ना किसी दूसरे डेटा नोड पे सुरक्षित पड़े हो। सो फर्स्ट वन we have see that what is the name node. Secondly, we see what is the data node. Now what is the secondary name node? So इसके बारे में भी पहले बता चुका हूं। तो secondary name node, this one is the third daemons or third process, and the secondary name node work concurrently with the primary name node as the helper daemons. And do not be confused about the secondary name node being a backup name node, because it is not, जो कि मैंने आपको पहले ही बताया, this is not a backup name node. This is the architecture or
representation how a secondary name node work. So there is a query for edit log files in the regular interval and copy the updated fs image back to the name node. So आप लोग देखिए, there is a name node. This one is the name node, and this name node will work on the fs image and update fs image with edit log files, the work of secondary name node. So secondary name node क्या करता है, query for edit log files in regular interval, और ये name node को send करता है. Again secondary node update fs image with edit log files, generate a new fs image and the copy of updated fs image back to the name node, this one fs image. Now the regular edit log files interval and fs image merge with generate a new fs image, and this fs image will now send to the name node. So these are the some functions of secondary name node. The secondary name node is one which constantly read all the file system and metadata from the RAM of the name node and write it into the hard disk or the file system. Second point is, it is responsible for the combining the edit with fs image from the name node. It download the edit log from the name node at regular interval and apply to fs image. The new fs image is copied back to the name node, which is used whenever the name node is started the next time. So this is the work or function of the secondary name node. Now we will see what is the block. तो ब्लॉक के बारे में भी मैंने कल आपको कहानी बताया था, एक बार और फिर रिकैप कर लेते हैं. बेसिकली होता है कि नॉर्मल जो मैं ट्रेडिशनल सिस्टम यूज कर रहा हूँ, अपना पर्सनल लैपटॉप या पर्सनल कंप्यूटर यूज कर रहा हूँ, in that case we know that memory is divided into different mini cells and the size of each cell are either 2 KB or 4 KB. But when we talk about HDFS architecture, then the block of memory divided into different cells and the size of each cell either 64 MB or 128 MB or multiple of 64 MB. और ये भी 64, 128, 248 ये भी प्रोग्रामर सेट करता है. So the size of block in HDFS architecture is 64 MB or 128 MB. But in normal computer, the size of each block is 2 KB or 4 KB. So blocks are nothing but the smallest continuous location on your hard drive where data is stored. And in general, in any of the file system, you store the data as a collections of blocks. Similarly, HDFS store each files as block which are scattered throughout the Apache Hadoop cluster. The default size of each block is 128 MB in Apache Hadoop 2.0, whereas 64 MB in Apache Hadoop 1.0. Achha, this one 1.x or 2.4x means 1.0, 1.1, 1.2. So version of 1 point something is known as a 1.x, and version of 2 point something is known as a version of Hadoop 2.x. So in case of when we talk about 1.x, then the by default size is 64 MB, and when we talk about the Hadoop 2.x, then the by default size of each block is 128 MB. And one more important is you can configure as per your requirement. Means being as a programmer, what is the requirement, we can configure the memory size, but it is mandatory that the size of each block is the multiple of 64 MB.
Now let us an example. Suppose that we have a text file like as a 514 MB. The name of this file is example txt, and we divide this 514 MB into different cells. As we know that if we are using a Hadoop 2.x, then the size of each block is 128 MB. So when we divide 514 into 128 MB, then we got 4 128 MB. 4 into 128 means the block size of A is 128 MB. So 514 MB में से 128 MB डेटा हमारा ए ब्लॉक में जाएगा. अगेन 514 माइनस 128 जो भी बचेगा उसमें से 128 MB बी में जाएगा. एंड दिस प्रोसेस कंटिन्यूड फॉर द सी एंड फॉर द ब्लॉक डी. लास्ट में 2 MB बचा तो वो हमारा ई ब्लॉक में चला गया. So it is not necessary that in HDFS each file is stored in the exact multiple of configure block size 128 or 256. Let's take an example where we have a file 514 as shown in the figure, and suppose that we are using the default configuration of 128 MB block. Then how many blocks will be created? 5. As we know that A, B, C, D, E. So first 4 block is exactly 128 MB, but the last block will be 2 MB size only. Now suppose that we again want to store another file which size is a 120 MB. So we not use another block like as the block F, because in block E we use only 2 MB, and the rest means 128 minus 2 means 126 MB space will be used, will be free. Now this 126 MB block or block E will be used for the another file. It means that कि अगर मैं normal traditional means normal अपना PC यूज कर रहा हूँ, and by default the size of each block is a 4 KB, और अगर किसी ब्लॉक में सपोज करिए 1 KB का डेटा चला गया तो बाकी जो स्पेस है मींस 4 माइनस 1 इज इक्वल टू 3, दैट विल बी वेस्ट. मीन्स वो किसी अनदर फाइल को स्टोर करने के लिए यूज नहीं हो सकता. बट HDFS आर्किटेक्चर में वी कैन यूज द रिमेनिंग साइज ऑफ ब्लॉक विल बी यूज्ड फॉर द नेक्स्ट डेटा और नेक्स्ट टेक्स्ट फाइल. Now you must be thinking why we need to have such a huge block like as a 128 MB. So the answer is a single point, that we are working here with a big data. So these are the some points related to the 128 MB, why we are using 128 MB block size. So instructor lead sessions, real life case studies, assessment and lifetime access. And summarize all things, then the single answer is because we are working with the big data, so we use a huge size like as a 128 MB block size. Next, replication management. So HDFS provide a reliable way to store huge data in a distributed environment as data block. The blocks are also replicated to provide fault tolerance. The default replication factor is 3, which is again configurable. So as you can see in the figure, where each block is replicated 3 times and stored on the different data nodes. This one is the figure. So this one like as a data node 1, this one data node 2, this one data node 3, and this one data node 4, and we want to store a block 1. So this one block 1 again we will take a replica on second node, again we will take replica on the third node.
So the block 1 will be replicated again on node 2, data node 2 and the data node 4. So if we are storing a file of 128 MB in HDFS using the default configuration, then we will end up by occupying a space of 384 MB, means 128 multiplied by 3, as the block will be replicated 3 times and each replica will be residing on different data nodes. And we also know that the name node collect only the block report from the data node periodically to maintain the replication factor. Means सपोज करिए कि किसी टाइम डेटा नोड हमारा बस्ट कर गया, फट गया, मीन्स डाउन हो गया, तो डेटा नोड 1 डाउन हो गया, ये नेम नोड को कैसे पता चलेगा? दिस विल बी नोन बाय हार्ट बीट रेट, जो कि हर 3 सेकंड में भेजता रहता है डेटा नोड नेम नोड को. सो अगर डेटा नोड पीरियोडिकली अगर डेटा सेंड ना करे नेम नोड को, द डेटा नेट विल नॉट नो एनीथिंग व्हाट अबाउट आर गोइंग टू द डेटा नोड. सो इसीलिए पीरियोडिकली वो नेम नोड ब्लॉक रिपोर्ट से डेटा नोड को पीरियोडिकली मेंटेन करता रहता है replication factor. Therefore, whenever a block is over replicated or under replicated, the name node delete or add replicas as needed. And नेक्स्ट वन इज व्हाट इज रैक अवेयरनेस. तो ये भी हमने कल पढ़ा था कि जब HDFS आर्किटेक्चर बना रहे थे तो देन एक वर्ड पढ़ा था, दैट इज द रैक अवेयरनेस. तो रैक अवेयरनेस बेसिकली दिस वन इज द फिगर. तो दिस वन इज अ रैक 1, रैक 2, रैक 3. सिंपल, जैसे आपकी अलमारी होती है, आपके 3 अलमारी हैं और हर एक अलमारी में दिस इज रो 1, रो 2, रो 3, रो 4, और हर एक रो में आप अपनी किताबें लगा के रखते हो. जैसे रो 1 में 10 किताबें हो गई, रो 2 में 5 किताब लगा दिया, रो 3 में 15 किताब लगा दिया. तो दिस वन एक एग्जांपल आप समझिए कि जो आपकी अलमारी है दैट इज द रैक, और उसके अंदर जो आपने 10 किताबें डाला है हर एक रो में, वो 10 मशीन हो गए, यानी डेटा नोड हो गए. सो यहाँ पे देखिए ब्लॉक ए है. सो दिस इज द ब्लॉक ए. इसकी रिप्लिका बनी हमारी यहाँ पे, और दूसरी रिप्लिका यहीं पे बन गई. या फिर सपोज करें दिस वन इज अ ब्लॉक सी, इसकी एक रिप्लिका हमारी रैक 3 में बनी और ये दूसरी रिप्लिका रैक 1 में ही बन गई. सो HDFS place replica and what is the rack awareness. So we know that name node also ensure that all the replicas are not stored on the same rack or single rack. It allows an inbuilt rack awareness algorithm to reduce latency as well as provide fault tolerance. And considering the replication factor is 3, the rack awareness algorithm says that the first replica of block will be stored on a local rack, and the next 2 replica will be stored on the different remote rack but on the different data node within the remote. And if you have more replicas, the rest of the replicas will be placed on a random data node, provide not more than 2 replicas reside on the same rack if possible. So this is the way how Hadoop productions cluster look like, and what is the rack awareness and populated of the data nodes. Now this one is a Hadoop cluster. There are some core switches, and each core switches have some rack switches, and each rack switches have some computers, like as a computer 1, computer 2 and computer n. सो जितने भी आप लोग कंप्यूटर लगाना चाहें, हर एक कंप्यूटर रैक 1, रैक 2, रैक 3 जितनी भी कैपेसिटी प्रोवाइड करना चाहें वो सारे रख सकते हैं.
So now one question is, what is the advantage of rack awareness? So these are the reason. First is to improve the network performance, and second one is to prevent loss of the data. So to improve the network performance means the communication between node residing on the different rack is directed via switch, and in general we will find a greater network bandwidth between machine in the same rack than the machine residing in the different rack. So the rack awareness help you to have reduced write traffic in between different rack, and thus providing a better write performance. Also, you will gaining an increased read performance because you are using the bandwidth of multiple racks. And second is to prevent loss of data. So we do not have to worry about the data even if an entire rack fail because of the switch failure or power failure. And if you think about it, it will make sense, as it is said that never put all your eggs in the same basket. So this is the all things which we have already studied in lecture 1 of big data और HDFS architecture. तो उसमें जो जो टर्म्स आया था उन सारे टर्म्स का मैंने एक रिटन एक्सप्लेनेशन दे दिया, जो कि कल एक ओरल एक्सप्लेनेशन भी था, बट आज के लेक्चर में सारा डिटेल हो गया. व्हाट इज द नेम नोड, व्हाट आर द वर्किंग ऑफ नेम नोड, एंड द सेम व्हाट इज द सेकेंडरी नेम नोड, एंड व्हाट आर द वर्किंग ऑफ सेकेंडरी नेम नोड, and third one is a data node, and two one remaining is the data node, task tracker and job tracker. So these two daemons, task tracker and job tracker, will be used in case of MapReduce. When we are working on the processing of the data, then we use these extra two daemons, that is a job tracker and a task tracker. Means in case of MapReduce, we will work on all 5 daemons, that is a name node, secondary name node, data node, as well as job tracker and task tracker. And one thing also we will see in the we had already seen in the previous lecture, that name node, secondary name node and job tracker is the part of master services. Task tracker and data node is the part of slab services. So ये सारा हमने already देख लिया है. And in the next lecture we will see what is the working or what is the architecture of MapReduce.